So we are here. So guys, finally you get to know it from the heading. It's on fussy eater and self-feeding. Okay, let me. What happened? Why did you go back? Actually, I tried to go back and it got cancelled. Sorry. Oh Chalo, my, okay. so Chalo, okay. no. I pinned it again. Yeah, okay. Haha. So we So, were talking about what is fussy fussy eater. eater What is fussy and eater? what, right? So basically, fussy eater is nothing. First of all, let me tell you, we just in a myth we are. It is just a natural behavior of a kid, being a choosy, showing some tantrums for food, particular food. So this is just a kind of behavior which a kid shows with their development. So it is very natural. This it's not any kind of disease or any kind of tantrum, or they are not doing it intentionally, right? Okay, The okay. kid grows the way kid grows, how he's active, how much he's active, and also if he's liking that food texture wise, flavor wise, or they're just exploring food, right? So if they don't like it, they will reject it, and we call it fussy eating. So it is not there, it is just a But child like developmental. for moms, it is a very like major issue. Yeah, Like because we make it as an issue, because we are like कि बस हम खाना परोसे बच्चा खाए और काम निपटे. That's not going to happen, right? so And what should we also do? we see what should we do. Let's start with कि what should we not do. What should we avoid to do, right? First of all, Yeah, क्योंकि yeah, जो करना है वो तो हम कर लेंगे, but जो नहीं करना है हम वो पहले करेंगे. Like don't punish your kid. Never ever punish your baby because he is not eating food. Right? I've yeah. Acha, seen not moms for. वो पनिश करते हैं, like they don't talk. मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो. मैं तुम्हें घूमने Yeah, नहीं लेके जाऊंगी अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो. They even slap, they scream, they scold, right? And that's not yeah, going yeah, to help. ठीक है. Secondary, yeah. you should not bribe. Never bribe a kid. कभी भी ये नहीं बोलना Okay. अगर तुमने ये चीज खाई तो हम बदले में तुम्हें एक चॉकलेट देंगे. बिकॉज उसके लिए क्या होगा कि वो जो चॉकलेट या एनीथिंग यू आर ब्राइबिंग हर और हिम, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी, रेदर देन दैट फूड. तो फूड एक टास्क हो जाएगा, लाइक दैट्स जस्ट अ नॉर्मल कोड जो उसे कंप्लीट करना है, और उसे तो मतलब सिर्फ उससे है, केक से या पेस्ट्री से या चॉकलेट से, उसे उस न्यूट्रिशनल फूड से The मतलब bribe नहीं है. things. Yeah. ठीक है. Okay. एंड Yeah, yeah. थर्ड थिंग विच यू शुड नॉट डू, डिस्ट्रैक्ट. You should never distract or force feed, right? Okay. Okay. डिस्ट्रैक्ट Okay. फीडिंग में क्या होता है, हमने राइम चला के दे दी, हमने टीवी चला के दे दी, इवन हम उसको चिट चैट करने लगे, स्टोरी सुनाने लग गए, राइम कहानियां सुनाते सुनाते राइम सुनते. या यूजुअली हमारे बचपन में होता था, आई सीन, मतलब लाइक मेरी नीज वगैरह को उनके बचपन में देखा है मैंने, लाइक मॉम से वो देखो चिड़िया रही है एंड मुंह में Ah, डाल yeah, देते yeah, हैं, yeah, राइट? yeah, yeah, yeah. वो This देखो, happens actually. इवन आई डिड I'll tell you. इनिशियली. I'll tell you. There's what twins. मेरे घर के नीचे रहते हैं, and ओके ओके. they have to go down and show, see car जा रहा है, bus is going this, and then they have to feed. So this is तो not okay. You said इट this is इट not good. यूजुअली हैपेंस, ऐसा नहीं है, ये हमारे साथ भी हुआ है. इवन वी हैव डन दिस. मैंने भी इनिशियली किया था, एंड आई इट्स स्टिल रिग्रेट, बट मैंने सही टाइम पे उसको समझ लिया. आई हैव And then you पोस्टेड, left मेरे it. इनिशियल पोस्ट देखेंगे ना आप, आई हैव पोस्टेड. Yeah, yeah. मैं इस तरीके से उसमें व्हाट आई वाज डूइंग, देयर वाज अ टॉय आई वाज प्लेइंग एंड आई वाज मेकिंग हिम फीड. ही वाज जस्ट 6 months old जब स्टार्ट किया था, राइट? एंड Okay, हम लोग okay. खिड़की के पास में बैठ के खाते थे. उसको मैं पंछी दिखाती थी, हवा Ah, दिखाती yeah. थी जो दिखती नहीं है. This is the usual Just nature of mom. around, हाँ, 1 या 2 महीने बाद, like he was 8 months around, and I realized and I read somewhere because I was doing influencing thing and पढ़ती रहती थी, बहुत पढ़ती रहती थी, and I told you we had a local group. Even there we read about distraction and feed, and then I realized, wow, what I'm doing. Like, am I stupid or what? I'm educated girl and I really didn't know about it. मुझे गुस्सा आने लगा. That was a mom's guilt. I really didn't wanted Yeah, to do yeah. with my baby.
एंड बिकॉज कई बार ऐसा होता था वो रोता था एंड मैं जबरदस्ती इसके मुंह में भी डाल देती थी ऐसा, क्योंकि That मुझे force रोना आता था feeding. कि उसे उसका He's पेट नहीं not भरा, having. वी वर Yeah. वरीड Stomach अबाउट is आवर not किड्स, full. लाइक वो हमारा Yeah. प्यार है, दैट्स अमाउंट ऑफ लव विच वी पोर इन दैट वे, लाइक हमें अपने बच्चे Yeah. को रुलाने में मजा नहीं आता, वी डोंट वांट देम टू क्राई, वी जस्ट वांट देम टू बी हैप्पी. When they cry, we realize that we are doing something wrong with them, right? That's a signal. Yeah. And I used to force feed him, and I remember I knew that we should not give sugar and salt till 1 year of age. तो my family used to say उसमें कोई टेस्ट ही नहीं है तो हाउ ही विल ईट. एंड वो मेरे ऊपर प्रेशर होता था कि ये तो खा ही नहीं रहा, तो घर में गलत प्रूव हो जाऊंगी दैट शुगर एंड सॉल्ट नहीं देना चाहिए बिकॉज टेस्टलेस है, एंड इसलिए वो नहीं खा रहा. तब तक मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं बोलती थी, आई यूज टू फाइट कि उसके लिए हर चीज एक जैसी टेस्ट में, बिकॉज उसने तो कुछ भी नहीं खाया. He don't know what is salt. He doesn't know what is sugar, right? What is sugar? But Yeah. yeah, they didn't know. Kids don't know what's that. They don't know any taste, right? Whatever we develop, Yeah. that is the first taste Honestly. for them, right? Yeah. But I was pressurized somehow. तो मैं उसके मुंह में जबरदस्ती हलवा, मुझे आज भी याद है, I pushed halwa ball I made and I pushed in his mouth and he was crying his lungs out. And उसे खिलाने के बाद he ate only 2 spoons and I cried a lot कि यार मैं कैसी माँ हूँ, I can't feed my baby. How, मतलब, what is this? This मतलब I'm a happens, failure. I can tell you. This I Yeah, can relate. this This really happens. everyone can And, relate. yeah, and but by God's grace, मैंने सही time पे realize किया and started with the self feeding. You can watch my video if you follow me since long. Then you can see Praveer is a self feeder. I never force Yeah. him to feed anything. I never So force so him to give how money. did this happen? Like someone has asked even, please, मैं तो अपने बच्चे को ऐसे ही खिलाता हूँ. Please, मैम कुछ tips बताइए. So please, we want to know how did you change that Praveer into self feeding thing? फर्स्टली आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड जब मैं पढ़ती थी, जैसे कि मैंने बोला, नेवर ब्राइब, नेवर डिस्ट्रैक्ट एंड फीड, नेवर Force feed. नेवर फोर्स देम एंड नेवर वन मोर पॉइंट आई टोल्ड यू, नेवर पनिश देम. Mm-hmm. 1-2 महीने के बाद आई रियलाइज इट. उसके बाद आई used baby led weaning method, right? I used to give him finger food. I used to give him what, मैंने कभी भी प्रवीर के लिए एक स्पेशल फूड नहीं बनाया. जो भी हम घर में बनाते थे माइनस सॉल्ट एंड शुगर टिल 1 year. सो वॉट एवर वी यूज टू मेक मैं वही सर्व करती थी. एंड ऑब्वियसली पहले महीने में तो जस्ट वन मील देना होता था, देन 2 meals एंड 3, ग्रेजुअली आई इंक्रीज्ड. एंड इनिशियली मैं फ्रूट्स देती थी बिकॉज ट्रेवल ज्यादा करती थी, बिकॉज मैं बहुत सोशल थी, तो आई यूज टू टेक फ्रूट्स और पनीर स्टिक्स और स्टीम्ड वेजीज, ये सब मैं उसे देती थी. वो तोड़ता था, फेंकता था. इनिशियली लगता था. नेवर. एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट बहुत जो याद रखना है, जब भी आप सेल्फ फीडिंग के लिए जा रहे हैं या अगर आप पसी ईटर से डील कर रहे हैं, तो नेवर गेट वरीड अबाउट मेस. यू शुड नेवर वरी अच्छा. अबाउट मेस. जो भी मेस हो, क्योंकि Yeah. गंदा तो होना है. ठीक है. Yeah, अगर आप obviously मेस kids के will do बारे में that. बॉदर करोगे तो यू वोंट बी एबल टू मेक योर बेबी सेल्फ फीडर, बिकॉज आई नो Self feeder. देयर इज वन मॉम, शी इज ऑल्सो अ फ्रेंड. शी टोल्ड मी, मैं तो वो जो वेस्ट होता है वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती. So that's not going to happen then. That's not going to happen. That's a reality. You have to accept the Yeah. way it is, right? बच्चे जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसे मैश नहीं करेंगे, उसे उसकी खुशबू उसकी खुशबू भी आती है उनको, एंड प्लस वो मैश करके उसका Oh, टेक्सचर okay. पहचानते हैं. एंड दे टेस्ट इट. ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है, आज बच्चे को कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, सेकंड डे ही वोंट लाइक इट, वो उसे रिजेक्ट कर Yeah, दे. this ठीक है, happens. दैट इज गोइंग Mm-hmm. टू हैपन. सो second point is you have to keep patience. Okay. Third is acceptance. You have to accept So the way it is. like you say कि patience रखना है, but the people they are asking like patience के time पे उस time पे बच्चों का पेट full होता नहीं है. Does this happen? How you judge it? How you can say बच्चों का Yeah, पेट how फुल will नहीं है? yeah how will we come to like they don't You eat? you you So can never judge it. A kid knows better. okay. यहाँ पर आपको गाड़ी की चाबी, गाड़ी का स्टेयरिंग बच्चे के हाथ में देना है. You have to select what you have to give. Okay. Let Okay, them okay. select how much they want to eat. ओके. यू Okay, कैन okay, नॉट okay, okay, जज okay. कि बच्चे का पेट फुल हो गया है. कई बार ऐसा होता है, जस्ट जस्ट सिंगल बाइट उनका पेट फुल. Mm-hmm. इट्स नॉट अबाउट पेट फुल, बिकॉज 1 year तक बच्चा ब्रेस्ट फीड पे रहता है, राइट, और फॉर्मूला Yeah, मिल्क yeah, पे yeah. रहता है, राइट. तो Yeah. वो So उनका we will मेन सोर्स understand. होता है. Okay, that is the main Mm-hmm. source of their nourishment and nutrition. So just
वन बाइट भी अगर वो लेता है खुशी से, दैट्स इट, डोंट फोर्स फीड, ओके, एंड ऑलवेज सर्व द फूड इन पोर्शंस, ओके, नेवर गिव, आप उस एक्सपेक्ट करोगे कि बच्चा जैसे ही खाना शुरू करे पूरी एक चपाती खा ले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। रिमेंबर, my sister-in-law came at my home and I was serving breakfast to my baby. I gave him itta sa, I think it was halwa or I don't remember what it was. He said, uttamam, right? She said, बस इसका पेट भर गया। मैंने कहा इसको और नहीं खाना, that means भर गया। Oh God, this So happens with every mom, you know. she was like कि मतलब she said something through her expression which I realized कि मुझे भी डाउट होने लगा। Usually it happens and हम अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, but no, you Yeah. are the best judge for your kid, you know them better, and सबसे बड़ी बात, they know themselves better, right? So Okay. never force feed, have patience, accept it, like अगर बेबी सिर्फ एक बाइट भी खाता है या दो बाइट भी खाता है and he's done, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप अ टाइम लिमिट। अगर आप एक दो घंटे तक बच्चे के सामने बैठे हुए हो खाना लेकर, तो दैट इज स्टूपिडिटी, दैट इज रॉन्ग, Okay. राइट? सॉरी, आई एम Okay. यूजिंग द वर्ड रॉन्ग, दैट इज Yeah, रॉन्ग yeah. बिकॉज 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स से ज्यादा आपको नहीं देना है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, हम स्कूल जाते हैं तो हमें लंच टाइम मिलता है, राइट? इट्स अराउंड Yeah, 20 to 30 मिनट्स, राइट? yeah. Yeah, yeah. कभी हमें 1 घंटे का लंच ब्रेक मिला है या 2 घंटे का लंच No, ब्रेक no, में, no. या टीचर्स No, ऐसा never. करते कि बच्चों का खाना खत्म हो जाए उसके बाद हम बेल को रिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता। वी This हैव अ can't सर्टेन happen. टाइम, राइट? सो आई एम Yeah. नॉट सेइंग बी स्ट्रिक्ट, आई एम नॉट सेइंग बच्चा मुंह में खा रहा है तो निवाला छीन लो, आई एम जस्ट सेइंग कीप अ टाइम लिमिटेशन। सो कंडीशनिंग का एक फिनोमेना होता है, They get कंडीशनिंग। used to it. दे गेट यूज टू इट, राइट? सो दे गेट यूज Yeah, टू इट, उनको पता है कि हाफ एन आवर है मेरे पास, एंड उनको जितना खाना होगा with their own speed, with their own pace, they will eat, and they will eat whatever they want. You have to give them some choices. Always try to, ये एक another point है जो बहुत important, you should give some choices. I'm not saying give them 10 choices. choices. 2 to 3 choices you should keep in the plate if it's possible. Like जैसे हम लोग दाल राइस बनाते थे, तो we always make a Oh, third सूखी सब्जी, right? You can yeah, keep yeah, some yeah. salad, you can keep some curd. आप कई बार ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फसी ईटर्स के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, यू कैन मेक अ प्लेटर, और जो सब्जी आपको उसको खिलानी है वो चीज आप वो थोड़े से पोर्शन में उस प्लेट में सर्व कीजिए, एंड बाकी खाना जो वो रेगुलर खाता है वो सर्व कीजिए। दैट्स वन वे यू Okay. कैन, Okay. समटाइम्स वो कभी तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, मे बी यू गेट फेल्ड, है ना, फर्स्ट टाइम उसने नहीं Okay. खाया, Okay. इट्स ओके, Okay. डोंट लूज द पेशेंस। 3 से 4 दिन बाद रिपीट इट, और आफ्टर अ Okay. वीक, यूजुअली हम एक सब्जी एक वीक में एक ही बार बनाते हैं, राइट? दैट्स व्हाट आई डू, एंड वी रिपीट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वो रिपीट कीजिए, मे बी 100 टाइम्स होगा, बट 101 टाइम वो जरूर खाएगा, दैट्स अ Okay. गारंटी। Okay. ओके, आई हैव Okay. ट्राइड, Okay. Okay. दीज आर ऑल That ट्राइड is एंड the patience आई thing. एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं कोई भी बुकिश लैंग्वेज में बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज ऑल माई एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, Experience, yeah. राइट? Mhm. बिकॉज आई हैव डन दिस। एंड वन मोर थिंग, कई बार ऐसा होता है आज बच्चे का मूड नहीं है, समटाइम्स ग्रोथ स्पर्ट रहता है, इट्स आई एम जस्ट सेइंग Teething and फसी all. ईटिंग इज अ नॉर्मल चाइल्डहुड डेवलपमेंट, चिल्ड्रन डेवलपमेंट, लाइक जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं उनका जो टेंट्रम होता है फूड के प्रति, वट एवर देयर बिहेवियर इज टूवर्ड्स देयर फूड, वो चेंज हो जाता है, दे विल बी लेस फसी एज दे ग्रो, राइट? Okay. दैट्स अ Okay. Okay. नेचुरल Okay. Acha. फिनोमेना। जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा वो ऑलमोस्ट सारे फूड खाएगा। So ऑब्वियसली what is अगर the आपको बिहेवियर होता है, age you say? Like age defined है, like for कि कब तक there's no fussy thing, there's no no thumb rule, defined it. फिर भी up to 6 years of age I'll Up say to. कि होता है बच्चों में टेंट्रम्स, क्योंकि उसके बाद वो काफी कुछ समझ जाते हैं, बट लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव यू एग्जांपल ऑफ टुडे, प्रवीर वाज नॉट eating मूंग दाल, he doesn't like green मूंग दाल, okay, I know he Okay. doesn't like because I also don't like, ठीक है? So Okay. what I do, I made some potatoes. I gave him chapati. I also made some lady fingers. He didn't eat that too because जब आलू होता है तो भिंडी भी नहीं अच्छी लगती है, right? But I Okay. served him. He didn't eat भिंडी. मैं खा रही थी. I modeled, right? अगर मैं demonstrate करूंगी, try to have meal with your baby. ठीक है? Okay. 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 डेमोन्स्ट्रेट देम, जो आप खाओगे दे वांट टू हैव दैट। आप देखना, अपनी थाली से ज्यादा घी दूसरे की थाली में दिखना है, दैट इज बॉर्न,
बॉर्न हमारे Okay, okay, अंदर okay, होता है वो चीज, राइट? तो मैंने भिंडी okay, एंड रोटी एंड आई टुक सम दाल ऑल्सो. आई डोंट लाइक दाल, दैट ग्रीन दाल, आई हेट okay, इट. okay, बट आई टुक बिकॉज okay. मुझे पता है इफ आई वोंट ईट ही वोंट ईट, ही वोंट इवन He ट्राई. want it, yeah, So he yeah. ate 2 spoons. He didn't eat more than that. He ate only 2 spoons. I just told him, baby, ये इसमें बहुत प्रोटीन होता है and it will make you stronger. If you want, you can Mm-hmm. have some. At least taste it. Okay. So he had it. And sometime it happens he doesn't have. So I just leave it. Because मुझे पता है कि मैं कितना भी फोर्स करूंगी तो उसके लिए उसकी हेट्रेड बढ़ती Basically, जाएगी. the rule is we have to go easily, easy go. It's not Yes, a we have big to deal to go have a easy. fussy It's eater. not a big deal. And Okay. just Like, don't feel guilty. And it's not like कि आपके बच्चे को nourishment नहीं मिलने वाला. Just give 20 minutes, mm. 20 to 30 minutes. If he's or she's not having, keep that plate aside and serve them a meal whenever is the next meal time or snack time. Don't Acha, repeat the this same this thing. this this query I got a DM. She Okay. said my mother-in-law came and she saw my kid and she said कि तुम्हारा बच्चा इतना thin इसलिए है because you don't you don't feed him like quantity wise बहुत कम खिलाते हो and all. So what kind of reply should they give? See, first of all, don't reply because they won't accept the replies. Okay. So that is natural. Talk to them. And what I do, I used to listen all this and I used to avoid it, frankly speaking. Okay. And then what happened? My mom-in-law never told me this because he was always fine. She knew that whatever she will do for his like health Perfectly. and whatever is good for him. But other Good people point, yeah. used to come and say कितना दुबला हो गया है. Then she used to follow them and say and ऐसा ऐसा ऐसा. I used to say okay. I used to say it's okay. It doesn't matter. अच्छा है ना, slim में बड़ा होगा तो he won't be bullied in school that he is fat. I used to defend myself. Okay, So that this is is a totally very okay. great answer. So guys, whoever DM'd it, me, तो ये reply बहुत अच्छा है. तो ये technique use करें आप लोग please. Just be Okay. calm and cool and ignore. कई बार you have to be ignorant. You have to ignore few Yeah. words. You have to ignore so many things in life, especially when you're a mother. Right? Okay. बदतमीजी तो आप हर किसी से कर नहीं सकते when especially they are your close ones and they are your family. You can explain them what you have learned and अगर नहीं explain कर सकते तो it's okay, leave it. If they don't understand, we have to It's just totally have okay. patience. Yeah, So, have like, patience. how do we Go come to easy. know, like, our kid is a fussy eater? How do we come to know कि our kid is a fussy eater? So, how you're saying he's a fuss eater? Depends why you're Like, saying he's yeah, a fuss eater. Because he's नहीं, choosy. I told you, kids are choosy. Sometimes what they do, you will like serve what them. happens na colicky, gassy, and fussy. The parents get confused between this. Like if they are Okay. not having for 2 3 days teething है and people gets confused. तो ऐसा नहीं है ना teething is not like Teething during is teething. totally, yeah, totally different. Fussy is totally different. I told you, fussy eater is not any issue or disease or problem. It is natural behavior, which I'm repeating again. हम्म एक बच्चे की ग्रोथ डेवलप जैसे जितना नॉर्मल स्लीप रिग्रेशन है, जितना नॉर्मल बच्चों का टेंट्रम्स है, जितना नॉर्मल हम्म बच्चों का कॉन्स्टिपेशन होना है, जितना नॉर्मल बच्चों का टीबिंग आना है होना है, उतना नॉर्मल फसी ईटिंग है. ऐसा कोई बच्चा नहीं है दुनिया में जिसको जो कभी भी फसी ईटर ना रहा हो. इनफैक्ट आप खुद को ले लो. हैव यू ईटन ऑल दी वेजिटेबल्स? Yeah, like यू यूज there टू are लाइक करेला sometimes. सिंस बर्थ. लाइक जब तक उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं पता थी, शायद करेला, हाँ, लौकी, then ब्रोकली तो हमने कभी जिंदगी में खाई नहीं. पता नहीं था कि ब्रोकली अब होता it's क्या है. अब हम अपने yeah. बच्चों को बोलते हैं ये बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, राइट? तो Yeah. जब हम ऐसे थे, तो व्हाई कैन यू एक्सपेक्ट, हाउ कैन यू हाँ, एक्सपेक्ट योर बेबी? how we are expecting Like this. I Yeah, yeah, remember मैं तो इतनी like I was so fussy. Now I can use that word for myself. I was so such a fussy eater कि मेरी मम्मा को मेरे लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था. एंड आज Oh, हम अपने okay. बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उनको ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड टच वुड, मुझे प्रवीण ने कभी भी सेपरेटली कुछ फूड प्रिपेयर नहीं करवाया आज तक, एंड मैंने किया भी नहीं. ऑब्वियसली जब स्टीम फूड करते थे तो उसके लिए अलग से फिंगर फूड बना देती थी, बट आई नेवर कुक For एनीथिंग. sure. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. अगर आप शुरू से उनके लिए कुछ अलग बनाते रहोगे तो लाइफ टाइम आपको वो एक्सपेक्ट करेगा कि मम्मा मेरे लिए कुछ अलग खाना बनाने Yeah, वाली है. yeah, this is important, You and don't have this to was do one this. query too. Like, कब से we should start giving the same food what we have on our plate. Since the day you start giving solids, you should give the same food.
बट या ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी मैटर करती है. जैसे आई स्टार्टेड विद ट्रेडिशनल वीनिंग, तो मैं इनिशियली थोड़ा मैश्ड फूड देती थी. बट इफ यू आर स्टार्टिंग डायरेक्टली विद BLW, लाइक बेबी लेड BLW. वीनिंग, तो you can just make some rice balls with dal, and you can make, you can give some steamed finger food, and these are all good food to go. And Yeah. even you will always get query. मैं पहले ही बोल देती हूँ इससे पहले कि ये query है एग और पोल्ट्री स्टफ, और या फिर नॉन वेज हम दे सकते हैं कि Yeah, नहीं दे egg सकते. was a the query. Yeah, the okay. day the day you start solids, you can give that. Just keep one point in mind: you should give that food in noon time. Don't give to try to give it sleep time. For example, if baby is Okay. allergic, और उसको कॉलिक हो जाता है या उसको कोई इशू होता है, तो वो आप सॉर्ट कर सकते हैं. अगर उसको रात को आपने दिया तो आधी रात में बच्चा आपको परेशान करेगा. इफ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, इफ यू आर गिविंग सम न्यू New. फूड, ऑलवेज ट्राई टू गिव एट नून टाइम. इवन जब अच्छा बेबी अच्छा. 6 मंथ कंप्लीट करता है, जो हम फर्स्ट मील स्टार्ट करते हैं, तो कीप इट इन नून. मतलब लाइक 12 o'clock, Okay, okay, 1 o'clock के आसपास दो. क्योंकि पूरे दिन में आपको उसका रिएक्शन पता चल जाता है. इफ बेबी इज नॉट एलर्जिक, यू कैन ऑब्जर्व. okay, okay, okay. And at समटाइम्स night we are not being able to observe या it. यू वोंट बी Okay. नॉट ऑब्जर्व. समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब Yeah, हो yeah. जाती है, एंड इवन आप They परेशान हो starts जाते crying and हैं. we don't या come to या know only एंड what's हम happening. अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई करते रहते हैं, एंड क्या हो गया क्या हो गया. तो Yeah, जब भी आप कुछ नया फूड ट्राई करते हैं, ऑलवेज ट्राई टू गिव इन आफ्टरनून. ठीक है. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ. आई एम जस्ट गिविंग ऑल दीज टिप्स थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस, और experience. जो मैंने सुना है, जो मैंने सीखा है. And that तो matters. Experience yeah, actually that matters. matters because obviously I told you I'm in a group where I learn so many things, and now I'm influencing here, so I study a lot, so I get to know through it. Because कभी कभी लोग उल्टा क्वेश्चन करने लगते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रही थी ये चीज. सो या Okay. दैट्स व्हाट आई Acha वांटेड टू guys, से. if you guys, if anyone has any query and if you want to write it here, you can. एंड वन Anyone. मोर थिंग आई रियली वांट टू टेल यू अबाउट, कि आप जब भी हाँ, लाइक वी हैव टॉक कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. फसी ईटिंग को Hmm. अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. आई रियली Yeah. मैंने कुछ पॉइंट्स याद करके रखे हैं कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना. सो आई रियली वांटेड टू Yeah, that शेयर, is important. बिकॉज मैंने इन टॉपिक्स पे भी पोस्ट भी नहीं किया, एंड हैड टू पोस्ट, बट आई डोंट गेट टाइम टू राइट इट ऑन. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर. पहली Okay, I'm चीज, blessed then. आप ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व योर किड इन किचन. राइट. अब अपने बच्चे को अगर किचन में इन्वॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर पीलिंग पोटैटोज, फॉर Oh, पीलिंग yes. एग्स, या फिर मटर छीलने के लिए, और आप चॉप कर रहे हैं, उनको किचन में साथ में खड़ा कर दिया, फॉर गिविंग सम यूटेंसिल और समथिंग. एंड what Hmm. I used to involve Praveen, and आज भी उसे कुकिंग का बहुत शौक है. You should tell them importance of food. लाइक जो भी फूड है, फॉर एग्जाम्पल आप जो भी बना रहे हो, लाइक कैरेट, आई ऑलवेज टेल हिम कैरेट से आईसाइट बहुत अच्छी होती है प्रवीर. सो यू शुड टेल देम. जब आप पढ़ रहे हैं, बुक्स में भी कई बार वेजिटेबल्स आती हैं, you should tell them importance of that. I recently got a query that मेरा बच्चा चपाती नहीं खाता. वो दलिया खा लेता है बट वो चपाती नहीं खाता. वो दाल राइस खा लेता है बट वो चपाती नहीं खाता. पहली चीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है चपाती का, बट ऑब्वियसली चपाती इज इजियर फॉर्म, राइट. तो पहली चीज तो उसमें एक रीजन, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट, बट एक रीजन ये हो सकता है कि आपने उसको लिक्विड फूड दिया है शुरू से. You have given them some semi-solid or all the liquid consistency वाला food दिया है, so they are habitual to it, right? Secondly, he doesn't know Okay. the importance of he doesn't know the importance Chapati. of chapati. Chapati. And Yeah, so yeah. उसको आप आटा गूंथते समय, when you are making dough, you should involve your kid. उसे थोड़ा आटा दो भी. And also you can help yourself by making different Create shapes of chapati. interest, basically. Ah, yeah, interest लाइक create मेक करके मेक and then. स्टार शेप. स्टार शेप माय बेबी से कभी कभी उसका मन नहीं होता, तो आई 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 आस्क हिम, रवि विच शेप चपाती यू वांट टुडे. सो ही सेज, मम्मा मुझे हार्ट शेप चपाती चाहिए, मम्मा मुझे स्टार शेप चपाती चाहिए. सो आई मेक दैट. Okay. दैट मच you have to do for your kid, right? So I'm not saying do much, but bit These making little your things bit, matter. yeah, that matters. So कई बार Hmm. आपने देखा होगा इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, so amazing moms are there on Instagram जो फूड आर्ट भी करते हैं. If you're good in that, do it sometime.
कभी कभी बच्चा को एक फेज होता है जिसमें वो बहुत ज्यादा टेंट्रम्स करता है। अगर आप कोई स्पेशल फूड बना रहे हैं एंड यू आर डेकोरेटिंग इट एंड फूड आर्ट करके उसे दे रहे हैं, तो दे लव इट, दे विल लव इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज जैसे प्रवीण ने मूंग दाल नहीं खाई, तो आई एम नॉट बॉदर्ड, बिकॉज दूसरे फॉर्म में मैं उसको दे सकती हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ डोसा विद इट, आई मेक डोसा नेक्स्ट टाइम विद इट, बिकॉज उसको मूंग दाल अंदर जाना जरूरी है। ही शुड नो द या इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन मूंग दाल, ही शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ येलो मूंग दाल, राइट? कोई भी फूड है तो उसे आप डिफरेंट फॉर्म्स में दीजिए, अगर वो एक फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करता तो। बट मैं जो मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं हमेशा उसको रॉ एंड रियल रख के, उसे पता होना चाहिए। मैं उसे झूठ बोल के नहीं देती खाना, कि फॉर एग्जाम्पल वो ब्रोकली नहीं खाता तो मैंने ब्रोकली का पराठा बना दिया। नो, आई डोंट डू दैट। आई जस्ट ऐसा कर सकती हूँ कि ब्रोकली को मैं अलग फॉर्म में बनाऊं, लाइक, ठीक है, बिकॉज उसको सौते पसंद नहीं, सौते किया हुआ पसंद नहीं, तो आई विल मेक You can स्टीम्ड make a वन। pakoda or anything of it, yeah, Yeah, but I will tell him the real thing, that is my, I have read somewhere कि stuffing करके दे दो, I don't prefer that. फॉर एग्जाम्पल उसको ब्रोकली पसंद नहीं है तो जो भी चीज उसको पसंद नहीं है तो मैं उसे दूसरे फॉर्म में दूंगी, बट आई ट्राई टू, आई नेवर लाई टू हिम, आई से कि ये ब्रोकली है। keep it real. कीप इट रियल, Yeah, यू हैव टू बी रियल, बिकॉज उसे पसंद हमें ब्रोकली कराना है। कब तक आप दूसरी चीज बना के दोगे? कब तक? yeah, yeah, समटाइम yeah. यू विल And गेट, if you keep lying, they won't come to know they, about they, it. they The won't come actual to know the importance of that thing. They won't importance like of it. it. Yeah, Plus, they will learn it. They will learn it कि अगर हमें कोई, मम्मा को कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो I have to lie him, her, sorry, yeah, right? yeah. तो अरे, okay, ये that is पॉइंट्स also. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं ये चीज बिल्कुल, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, आई अच्छा, कैन नॉट and there's टॉलरेट one more या query. या There's a lady, उनका baby, अच्छा, I wrote it, हाँ. उनका baby actually she used to feed before वो rice and दाल को like मिक्सी में चला के, okay. And now if she's trying, she's 1 year 7 months, okay. And she's trying to feed her baby rice and dal, she's not eating it. So what do you suggest for them? अगर उसको पहले मैश करके पहली दो, शी चीज, इज ईटिंग इट, बट इफ शी इज गिविंग सो इट लाइक यहाँ बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, आपने उसको आदत डाली हुई है, यू हैव मेड हिज इनिशियली, हैबिचुअल, राइट? सो या या इट वोंट ऐसा, ऐसे नहीं होता कोई भी काम, ठीक है? इफ देयर इज अ किड एंड यू शी हैव इज टू, 1 year 7 months. या सो इट्स ओके, डोंट पैनिक, उसे इसी फॉर्म में दो, डोंट मिक्स इट। मैंने And आपको क्या बोला, actually अगर she is worried because उसके आसपास में वो अपने बच्चों को, वो बाकी बच्चों को देख रही है, everyone is eating like, सब अच्छे से खा रहे हैं, and my वो, baby is ये तो बिल्कुल मतलब, दैट इज नॉट इवन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। डोंट कंपेयर योर किड विथ योर, विथ एनीवन, इवन इफ यू हैव टू anyone. किड्स, डोंट कंपेयर देम विथ ईच अदर, okay? Okay, So okay. because every kid has their own kind of development, every kid has their own, uh, problems, issues, or environment, the way Taste bud they have, also, yeah. सो डोंट कंपेयर, पहली चीज। एंड सेकंड चीज, गलती बच्चे की नहीं है, आपने उसको पीस के दिया था, बच्चे ने कभी आपको नहीं बोला कि मुझे पीस के दो, राइट? सो नाउ यू आर द कल्प्रिट, नाउ यू हैव टू करेक्ट इट। सो पहली चीज, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? दूसरी चीज, फोर्स फीड नहीं करना। तीसरी चीज, आई टोल्ड यू, जब भी आपको कोई चीज सर्व करनी है, आप एक प्लेटर बनाओ, ऑलवेज मेक अ प्लेटर, एंड उसमें वो चीज दो जो आप बच्चे को इंटेंशनली खिलाना चाहते हो, साथ में वो चीज दो जो उसकी फेवरेट है। Yeah, ऑलवेज yeah, कीप yeah, हिज मोस्ट Tabassum, we फेवरेट। won't compare. Thank you so much. So there is always, you have to keep one thing which is most favorite. Obviously बच्चा पहले वो खाएगा जो उसका फेवरेट है, बट वो टेस्ट जरूर Okay. करेगा जो उसको नहीं So पसंद है। quantity, what do you say about quantity? That quantity इट should शुड be बी little one. ऑलवेज इन अ स्मॉल Little. पोर्शन, बिकॉज देखो, Yeah. खा लिया तो आप उसको और सर्व कर सकते हो, ठीक है? पहली Yeah, बात है, yeah, yeah. ज्यादा देखकर वो वेस्ट ज्यादा करते हैं, राइट? जैसे Hmm, प्रवीर hmm, की hmm, hmm. आदत है, नाउ आई नो हिज, लाइक ही इज ईटिंग नाइसली, तो वो बोलेगा, मम्मा मेरे लिए और रखा है? ऐसे, हाँ बेबी Hmm, अंदर रखा है, वंस यू विल फिनिश दिस आई विल गिव यू मोर, क्योंकि मुझे hmm, पता है hmm, वो hmm. इसके बाद नहीं खाएगा। He बट आई won't कांट have से, it. आई वोंट से कि बेबी आई वोंट गिव यू, तुम्हारा हो गया, बिकॉज आई एम नो Ha, वन ha, टू ha, जज ha. मी, आई एम नो वन टू से कि Yeah. तुम्हारा पेट भर गया, बिकॉज इट्स हिज स्टमक, उसका पेट है, उसको पता है कि मुझे कितना खाना है, राइट? Hmm, सो hmm, hmm, hmm. आई नेवर टेल हिम दैट। समटाइम्स ओवर ईटिंग हो जाता है तो आई डू स्टॉप, क्योंकि कई बार बच्चे ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनती है जब, राइट? Hmm, दैट hmm, टाइम hmm, hmm, hmm. आई डू, बट वो भी वंस, जब मुझे लगता है कि बहुत हो गया, नाउ आई कैन स्टॉप, ठीक है? Yeah. बट बच्चा जज कर सकता है अपना
क्रेविंग, लाइक अभी उसको भूख लगती है तो सेज मम्मा खाना बना के दो, एंड दैट्स एन अचीवमेंट। वंस योर बेबी सेज कि मुझे भूख लगी है, दैट इज योर अचीवमेंट। He can, judge his or her own cues. They know they are hungry, so that means you have achieved one step, you have achieved Okay. something कि आपका बच्चा अपनी भूख जज कर पा रहा है। ठीक है, so I always say one thing, you will decide what your baby will eat, but your baby will decide how much he or she will eat. Okay. Quantity, Yeah. we Yeah, can't decide that. we cannot judge, but always give in small portions. Sometimes ऐसा होगा कि अगर आप साथ में खा रहे हैं तो बेबी को आपकी प्लेट वाला चाहिए होगा, आपकी प्लेट का भी Yeah, चाहिए। सो yeah, this दैट्स happens. नॉर्मल, जस्ट डोंट, Normal. जो भी बच्चे को खाना है, अगर आप हाई चेयर वाली मॉम है तो हाई चेयर पे बिठा के, या मेरे जैसे फ्लोर सिटिंग से स्टार्ट किया है, या टेबल चेयर नॉर्मल वाली, लाइक बेबी, मेरा बेबी पहले फ्लोर सिटिंग पे खाता था, अभी ही इज लाइक और नॉर्मल टेबल चेयर जहां हम बैठते हैं उसके ऊपर अपनी छोटी चेयर रख के Okay. खाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू, ये मेरी एक ट्रिक है विच आई यूज, की कंपार्टमेंट प्लेट यूज कीजिए। दैट्स वेरी हेल्पफुल, Okay. बिकॉज कंपार्टमेंट प्लेट में बेबी को समझ आता है, एक ही प्लेट में सारी चीजें रखते हैं ना तो ही इज लाइक ओवरवेलमिंग हो He जाता है, gets राइट? confused also. या सो यूज अ कंपार्टमेंट प्लेट, उसमें ये होगा कि And बच्चा अगर, when should we try start using compartment plates and all? since day one you can start, there's no issue. But see, initially मैंने भी mistakes किए, as I told you, I used to give him a small, but मेरे पास इतनी छोटी है, always keep things small in size, क्योंकि बच्चे को Okay, वो okay, भरा okay. भरा दिखना चाहिए, लाइक बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी नहीं है मेरी प्लेट में, तो कीप स्मॉल साइजेस। फॉर एग्जांपल इनिशियली तो आप हाथ से करोगे, लाइक बच्चा हाथ से खाएगा, एक्सप्लोर करेगा। बेबी लेड मीनिंग का मीनिंग यही है कि आपको बच्चे को एक्सप्लोर करने देना है फूड को, उसका टेक्सचर, उसका Yeah. टेस्ट, वो मैश करेगा, गिराएगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप हाई चेयर मॉम है तो आप तो डायरेक्ट ट्रे में रख सकते हैं, राइट? नो नीड ऑफ एनी प्लेट और समथिंग, यू कैन कीप ऑन द टेबल, एंड बेबी विल हैव इट थ्रू द ट्रे, उसे एक्सप्लोर करेगा, Yeah. थोड़ा थ्रो भी करेगा, एंड इट्स ओके, टोटली ओके। It's मैस true, के लिए हाँ. तो आपको, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड अगर बच्चा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा ग्रोन अप है, तो आप कंपार्टमेंट प्लेट्स यूज कर सकते हैं। मैंने Hmm. 1 ईयर के बाद, वन You प्लस ईयर, started तो आई यूज्ड, after 1 year. बिकॉज Okay, you started after इनिशियली one तो year. इतना ज्यादा खाता ही नहीं था, बहुत लिटिल लिटिल, बिकॉज So ही वाज ऑन when did ब्रेस्ट। Praveer started self-feeding himself? I remember he was 7, 8 months. I used to give him. He showed interest actually. Whatever we used to Okay. eat, he wanted in his hands. So मुझे समझ नहीं आता था तब सेल्फ फीडिंग भी होता है। मुझे एज यूजुअल Kamal, मॉम cool. को, They are saying, wow, lovely, very helpful. I confess today I am also doing some mistakes. I sure do right way. Okay, thank you so much. yes, Kamal, you are always a sweetheart. So what I was saying, I just forgot. I really forgot what No, I was talking. we were talking about Praveer actually, self-feeding, Yeah. seventh month. So what happened one day, we were having that parmal, murmure. I just, Okay, yeah. it was a snack time. I just gave him. हाँ हाँ. He took the, bowl with from my hand, and he just explode सब गिरा दिया उसने. फिर नीचे से उठा के he was having one. So they have Okay, their okay. own way of exploring things, right? We should let do these things so that they Yeah, can explore and yeah, they can you understand. have to The, make a proper the basic is space. this. अगर if you have high chair, yeah, or booster chair, then तो you have that chair and tray. If you don't make a proper space, we used to sit on a mat, and वहाँ बैठ के वो explore करता था food को, right? And Okay, okay. I never stopped him initially. As I told you, initially I also did mistakes, but now I'm totally okay with it. And वो बहुत mess करता है आज भी. Till now he does it, but I'm totally okay with it because कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं होती, because उनको कंट्रोल नहीं होता. फाइन कंट्रोल जब तक Okay, नहीं होता, दे डू यू दैट मिस्टेक, राइट? एंड इम्पोर्टेंस okay. सबको बताना है गिराने की, ऐसा नहीं बोल रही कि उसको नहीं बताना है। सब मॉम सेज कि मुझे वेस्टेज, आई टोल्ड हाँ. यू वेस्टेज Not नहीं just होता, moms, like my mom, I give my girl to do mess and all, but my mom says उसको अगर बताओगी नहीं कि it's dirty, she'll play with that dirt. तो हाँ, yeah, we have to it tell this happens, also कि this it is happens, but it's okay sometimes. And obviously बच्चे like प्रवीर बाहर जाता है होटल्स में, वो कुछ भी गंदा नहीं करता है, एंड ही नोज कि उसे अपने yeah, कपड़ों का yeah, this ध्यान रखना happens. है। दे लर्न थ्रू, They with learn with time things. they learn things, and they know where to do what. एंड हर चीज में आप अगर उसको Yeah, नच करते रहेंगे, हर चीज में उसको पिंच करते रहेंगे, तो वो इरिटेट हो जाएगा। एक और चीज, एक yeah. इम्पोर्टेंट पॉइंट और है,
यूजुअली व्हाट हैपेंस, बच्चे क्लिंगी हो जाते हैं या फसी हो जाते हैं, तो वी गिव सो मच ऑफ अटेंशन टू इट, राइट? सो दे विल रिपीट बिकॉज दे वांट योर अटेंशन. ठीक है. आप ओके जितना या आप जितना अटेंशन दोगे उतना. आपको चुच्चू आई है? अच्छा, दीदा किसी नहीं बोला? जस्ट गिव मी अ मिनट. okay yeah sure. Okay, guys, till then she's away. I must tell it, she is doing amazing. Guys, please like and please share this video because this video is very helpful. This is going to help many moms. So if anyone is live, let's check this out. Check this video. I'm going to save this and please share this. Sorry. He never I comes like this, promoted. but Abhi, you said, see, I told you attention. That's what they want. Yeah. So, if they want attention, आप अगर attention दे रहे हो उनको, तो they'll repeat it. Okay? They are going to do it again and again. वो खाना फेंकेंगे और नहीं खाएंगे, नखरे करेंगे because you are giving attention to it. For example, बच्चे को आपने खाना दिया, ठीक है? He is having something and उसके बाद बोलते हैं, Mama, I'm not liking it. It's not good. या he or she's crying, or you say, it's okay, baby. कोई बात नहीं, and take the plate away. If you don't want to eat, don't eat. You Okay, have to be, okay. don't That's say it smooth. rudely, but Smoothly handle. yeah, you have to sometimes उनको भूखा भी छोड़ना पड़ सकता है. So don't worry about it. Yeah, दिन this is में one चार thing. This से is छह one thing. meals होती हैं. You have 4 to 5 meals in a day. अगर वो एक टाइम थोड़ा नहीं भी खाता है तो it's totally okay. Any It's okay, behavior, na. You, it's we, totally okay. matlab, there's not, we should not have that mom guilt now that we are a bad mom if No, they no, don't eat you one, should not. Why they you skip have to one be? meal. You have given a meal ना, ऐसा तो नहीं you have not served him. You served him ना. Yeah, And the ऐसा baby तो नहीं उसने कुछ didn't. भी उसका फेवरेट नहीं रखा था. Sometimes happens कि हम literally we know it कि वो नहीं खाएगा. अगर हम वो सर्व करें तो then you are wrong, right? But if you're serving which he used to have, and if not, I told you And then give also them did. 2 to 3 options. Don't give them too many options, but give them 2 to 3 options. Praveen, you will have lady finger or potato. Or Praveen, you will like every morning he wants poha. Obviously, I cannot give poha to him every morning in breakfast. Every day, So yeah, I just yeah, told him, Praveen, today I didn't make poha. I have made something else, whatever I take name. But I will try to explain him it very nicely so that he'll love to have it. I told him, baby, like I made some steamed rice ke balls बनाए थे मैंने. So I don't know what to call it. I told I made balls for you. You will love it. Is it balls? I'll eat balls. I said, yes, you will eat balls. I made balls for you. And he was excited till I prepare it. I was like, he was so excited. Mama, I want to have it. So you have to create some okay. excitement, right? Basically, with fussy eater, we have to handle it smoothly. It's not a big Very deal to have simple. a fussy eater Not a in big our deal life. because it is natural and it will It's go with the very time. natural. And once My the God, this you see you completely also. changed the view of this fussy eating thing, and we were like fussy eater. No, no, it's not a big deal. And plus one more thing I'll add here कि with time they'll change. पहली चीज और दूसरी चीज डिपेंड करता है बच्चे का स्ट्रेस कितना है मील टाइम पे. You have are you stressing them a lot, right? And also वो कितना एक्टिव था. आज उसने दिन में पेट भर के खाना खाया, वो भी लेट खाया. एंड आप एक्सपेक्ट करोगे कि शाम को वो स्नैक्स भी खाए और उसने Again. खाना खा के वो सो गया. He was not active at all. Why will you feel hungry? So how can you No, expect a obviously. kid to have? इतना सा पेट है उनका, इतना सा स्टमक है. How will they be hungry? They won't be hungry, right? So they won't have it. Yeah. They won't like to have it. So it's okay. कोई snack grazing तो बच्चों अगर if you have a joint family तो grazing is going to have take place. So you have to be like okay with everything, right? And thirdly, एक और चीज मैं एक important point cover करना चाहूंगी यहाँ पे before life gets over. यूजुअली व्हाट हैपेंस कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं खाना खा लो उसके बाद लाइक यू मेड सम हलवा और आज घर में केक आया है, पेस्ट्री आई है, तो व्हाट यू से यू मेक इट अ सेपरेट मील, राइट? कि अभी आप ये खाना खा लो उसके बाद हम ये खाएंगे, ठीक है, We'll सेपरेट give मील. that, huh? इफ यू आर गिविंग इन स्नैक दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट इफ ही इज हैविंग लंच एंड लंच के बाद आप उसको देने वाले हो तो यू आर मेकिंग इट अ सेपरेट मील, राइट? तो वो आपको चीज नहीं करनी है. आई एम नॉट Okay. नॉट टॉकिंग अबाउट ब्राइब.
what you have to do, हाँ हाँ. if you want to give him or her cake, so जो उसका प्लेटर बनाया है उसमें ही आप उसको दाल चावल केक, दाल चावल हलवा, दाल Okay, चावल yeah. whatever you have, जो भी स्वीट देने हैं, जो भी उसकी फेवरेट चीज आपने Whatever आज, extra बाई thing चांस it is. लड्डू, Yeah. पेड़ा, समथिंग कम्स, समथिंग और अदर थिंग्स कम एट योर होम, राइट? तो वो आप उसको रखिए, उसको एज ए सेपरेट मील मत सर्व कीजिए, मे बी ही और शी विल ईट दैट फर्स्ट, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा Just a क्या second. करेगा There's उस, there's this thing. uh, हम उनको भूखा छोड़ देते हैं तो वो रोने लगते हैं, क्रैंकी बिहेव करता है, फिर हमारे आसपास हमारे फैमिली के पर्सन सपोर्ट नहीं करते हैं और बोलते हैं कि सेपरेट मील बना लो एंड ऑल. पहली चीज कि दूसरों को तो सुनना ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज फैमिली, या डोंट दूसरी लिसन चीज, टू फैमिली थर्ड चीज, यू हैव टू क्रिएट योर ओन बॉन्ड विथ योर बेबी। आपको बच्चे को रोता नहीं छोड़ना है, नेवर सेड कि बच्चे को छोड़ दो, हड़का दो, चिल्ला दो, डांट दो। आई जस्ट सेड मेंबर. कि इफ ही और शी डजंट वांट टू हैव, से बेबी आपको वांट टू हैव, या. कीप अंडरस्टैंडिंग, बच्चा आपको समझता है, इफ डजंट अच्छा, वांट टू there's this thing, like sometimes what happens कि baby want to हैव, have that just biscuit. No, mama, please, I want to have a biscuit only today. So can we give biscuit sometimes? Like sometimes, no, no, mama, I just want to have chips today. So सी आई what should we ऑलवेज do? से आई एम बिट स्ट्रिक्ट, तो मैं उसे उसके टाइम पर ही वो चीज देती हूँ। लाइक इफ इन मॉर्निंग ही इज आस्किंग, आई हैव नेवर गिव हिम टिल नाउ हाँ, बिस्किट्स टिल not नाउ, morning. so no, I have not Oh, gave him biscuits, he has not eaten अरे biscuits till that's now, good. right? I make That's cookies good. at home. Recently I got हाँ. some homemade bakery जहां से मैं उसके लिए कुकीज लेकर आई थी, that were wheat and jaggery cookies, right? तो ही लाइक इट, एंड उसे कुछ नया मिला, ही वॉज लाइक कि मुझे देना है। तो इनिशियली पहला दिन वो रोएगा कि मम्मा मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी। यू हैव टू से, यू हैव टू क्रिएट कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे कि आप उसको बोलोगे कि ये मॉर्निंग में लंच का टाइम है, दिस इज नॉट टाइम फॉर कुकीज बेबी, इन इवनिंग आई विल गिव यू कुकीज, दैट इज फॉर श्योर, आई प्रॉमिस यू एंड आई विल गिव यू दैट, ओके? एंड यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, यू डोंट हैव टू लाई। Keep your promise. शाम को जब होता है, ही क्राइज, आई एम नॉट सेइंग इनिशियली होता है, बट उसके बाद वो प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे नाश्ते में कुकीज नहीं मिलने वाली है, मुझे नहीं लंच में कुकीज मिलेगा. नहीं मिलने वाली है, मुझे इवनिंग Yeah. के स्नैक्स में We या have to मॉर्निंग के get स्नैक्स them में, prepared या यू हैव टू टेल देम yeah, क्लियरली। ऐसा उसके बाद clearly. ऐसा नहीं है Like बच्चा not a नहीं बोलेगा। lie, हाँ. डोंट Hmm. स्कोल्ड और स्क्रीम, अगर आपको लग रहा है कि आप Hmm. डांटोगे और बच्चा नॉर्मल हो जाएगा तो हो जाएगा, बट दैट विल बी विथ फियर, नॉट विथ योर लव और रिस्पेक्ट, ओके? सो Okay, कीप okay, okay. लव एंड रिस्पेक्ट विथ योर किड, राइट? ऑलवेज से, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई डू। प्रवीर ने मुझे बोला ब्रेकफास्ट में, बट आई न्यू कि अगर वो ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट, सॉरी, जो अर्ली मॉर्निंग उठ के हम दूध देते हैं बच्चों को और हमारा ड्राई फ्रूट Hmm. टाइम है, राइट? ही आस्क्ड मी फॉर Hmm. कुकीज। एक दिन मैंने मना किया, फिर दूसरे दिन मैंने सोचा ठीक है, अगर वो सुबह खाता भी है दूध के साथ तो इट्स ओके, राइट? बट Hmm. Hmm. ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में वो मुझसे कुकीज मांगेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट। Not going to give मॉर्निंग it, और इवनिंग obviously. स्नैक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों टाइम वो उठकर आते तो दे फील इट्स द सेम, राइट? दे हाँ, कैन yeah, हैव yeah. द सिमिलर थिंग्स। सो आई सेड Hmm. जहां पॉसिबल है कि इट्स ओके, Hmm. यू कैन अलाउ देम, बट वेर यू Hmm. फील इट्स नॉट पॉसिबल, you should just tell them clearly, tried Hmm. this by diversion from what he wants. Yeah. I really don't uh, like distract them, because I think the Dimension, you don't support that. emotions are kind of thing जो हमें बाहर निकालना चाहिए बच्चे को, like we can distract, You, but according to you, no, we should develop that emotion with food, यस। and we should फॉर be एग्जाम्पल clear. उसे 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 बिस्किट चाहिए, मैं उसे बार बार ये नहीं बोलूंगी कि प्रवीर अभी अपन ये खा लेते हैं, अभी इसको छोड़ो। आई डोंट डिस्ट्रैक्ट इन Hmm. दैट वे। मैं ये, हाँ, Hmm. दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी कि यू कैन डिस्ट्रैक्ट देम विथ अदर थिंग, अदर गेम, अदर Hmm. स्टफ, Hmm. Hmm. दैट इज पॉसिबल। Hmm. बट एक चीज नहीं देनी है उसकी जगह मैं दूसरी चीज दूंगी, दैट आई एम दूसरी नॉट चीज, गोइंग टू डू। that's good. आई वोंट डू Okay. दैट। कि उसका जो रूटीन है, आई एम नॉट सेइंग कि रूटीन कभी ना बिगड़े, लाइक व्हेन वी गो टू होटल्स आई डोंट स्टॉप Yeah, हिम फॉर sometimes it. एनीथिंग, ठीक है? Okay, okay, उसको okay. पता है आज अच्छा, अच्छा. होटल जाएंगे, नाउ ही नो, सी ऐसा नहीं है मेरे घर में बाहर का नहीं आता, माय हस्बैंड इज वेरी फूडी, सो आई डोंट Okay. अलाउ हिम टू हैव इट, लाइक हफ्ते में 3 बार हमारे घर में अगर बाहर का आ रहा है तो आई कांट अलाउ हिम टू हैव 3 days in a week, Everything, right? every time. So हाँ, yeah. he knows कि पापा का पार्सल आया, पापा विल हैव इट, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट। मैं That's बाहर का not his. खाना बाहर जाके खाऊंगा, ही सेज टू पापा ऑल्सो, पापा, वो माय हस्बैंड जानबूझ के वो ट्राई करते हैं कि क्या मेरी बीवी ने सिखाया है इसको, तो ही आस्क हिम यू वांट टू हैव इट, ही सेज नो पापा, बाहर No, का Papa. खाना बाहर जाके खाते हैं।
घर का खाना घर में खाते हैं, Okay, मम्मा ने that's बनाया है मेरे लिए. Sometimes we ask that's कि good. लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ या कोई पूछेगा बेटा आपके लिए कुकी लेकर आ, ही सेज मम्मा घर में बनाती है ना मैं वो ही खाऊंगा. He says it Oh because they my God, this developed is that, right? You have to hmm. develop it. That's the Sometimes, loyalty you have yeah, developed. develop, we have developed it, and sometimes it happens you have to give it. Like, ठीक है. But that has to be once in a while. वरना बच्चा अगर बच्चा रो रहा है and you giving it, You get used, never do that. they get नेवर used डू to दैट. it. Yeah. अगर बच्चा एक बार भी रो रहा है और अगर आप उसकी इच्छा पूरी करो तो मैंने ये देखा है कि बच्चा हर बार रोएगा और अपनी इच्छा पूरी. They get used to So it. I never do that. That's अगर their वो रो रहा technique. है तो मैं और नहीं करती. फिर तो They I'm uses not this going to do technique. it until unless I don't empathize him. I just don't calm him. I just don't explain him. उसके बाद मैं उसकी इच्छा पूछती हूँ, उसको समझाती हूँ, and उसके बाद भी sometimes obviously मैंने भी give up किया है, ऐसा नहीं है, but sometimes you have to be strict with your consequences. अगर आप give up हर बार कर देते हो तो you cannot deal with fussy eaters because सिर्फ fussy eating ही Yeah, कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े tantrums भी झेलने हैं. Like yeah. it Okay. it's about so many things. Like इतनी सारी चीजें. Like आज वो सोया नहीं. I was crying before coming live. I was literally crying कि मैं live नहीं जा पाऊंगी because last नहीं time जा also पाओगे. he was crying, so I just stopped. I didn't do. I scolded him for a second and then I felt guilty. मैंने कहा मैं इसे क्यों डांट रही हूँ? He doesn't want to sleep. And actually what happened? Problem is mine because कल मुझे लगा था लाइव है and I was just I made him sleep yesterday and I was waiting for the live and Yeah, मेरा ध्यान गया कि today is live. So sometimes we are wrong, right? So we cannot yeah. keep them like it's okay. They are kids and they According to have, us. Yeah. it's totally okay. So yeah, this is all about my experience about fussy eaters Thank you and how I deal. so much. This is today only I'm going to make a YouTube channel, and first this video is going to be shared because this was the most important and most amazing session today I By the had. way, I Thank also you. have a YouTube channel. If you know it, if you don't know it, then follow Really? me on YouTube. I Yeah, don't sure, sure. post, very regularly, but I have posted about Sure, sure, BLW, sure. baby led I weaning. haven't made it yet. I was going to make a YouTube channel, the Mommies Talk, but today I'm going to make it because this is going to help so many people. Yeah, it is going to So, have for because I sure. have also not posted about this And recently. So this I'm going was to the tell you. most Uh, helpful, most amazing session I have ever had or I have ever seen, in fact, because you were amazing. Thank you so Thank you, thank much you, for thank you. It coming. was just my And thank you experience. for, There was so much, so much to talk about. I forgot so many points because देखो अगर it will be too long ना, nobody's going to watch it. So it's okay. yeah, वैसे भी I'm going to make a vlog and I'm also going to make a yeah, post sure. on it I'll share it soon. for sure. Huh. I have done baby-led weaning on my stories. When to start solids, I have done on my, sorry, not stories, sorry, IGTV videos. I've already done on my Okay, page. So you can check them out okay. if you want, and if anybody needs any Guys, help please check this. in Check it that. out. Please check So everything there because I know everything is helpful on her page. also on YouTube channel, it's there. So yeah, it may help you out. And I'll soon And your post YouTube on channel self name feeding. is Same Mom's Cruise. Same Moms Mom's Cruise. underscore cruise. Okay. Same, yeah. Okay, Soon I'll thank be you, thank posting about self feeding and fussy eating also because so many queries I get. But you told me for the live, so I thought we'll keep this topic because I'm not able to, you. Smaller one. Yeah. complete this task. So I'll just share your IGTV video on my stories. So it will help Okay. Thank you most. so much. Okay, bye Thank you bye. for coming. Bye bye. Take care.